reaction are basically based on the energies of the products and reactants. Like if we look at the graph of activation, the exothermic and endothermic part, if the product is more stable than the reactants, it will be a exothermic reaction. And if the reactants are more stable than the product, it will be endothermic reaction. Yes. What is threshold energy? Threshold energy, sir, as I said, the activation part, like how much energy we are required to give to a reactant so that it will react. The, this energy part is the threshold part. Yes. Next, what is Arrhenius equation in chemical kinetics? And what is the role of Arrhenius equation in chemical kinetics? So, Arrhenius equation basically relates the rate of reaction to the activation energy and temperature. How much the rate of reaction will be affected by change in temperature tells we can study it by Arrhenius equation. Yes. What is the formula? Arrhenius K equation. is equals to A into e की power minus EA upon RT. Any application of Arrhenius equation? So Arrhenius equation basically tells us about how much, like a particular change in temperature, how much it will affect the rate of reaction. Yes. This specific phenomena is studied by the Arrhenius equation part, and it depends on the activation energy. If the activation energy is very high, so minimum amount of change in temperature will cause a drastic changes in rate of reaction. But if the activation energy is low, the drastic change in temperature will cause very minute change in the rate of reaction. So it all depends on activation energy. Yes. Good. Next is catalyst. Yes. And catalysis. What is catalysis? Catalysis is basically the use of catalyst in a particular reaction to hamper the output or hamper the rate is called catalysis. Yes. And what is the effect of catalysis in any reactions? So it basically decreases the activation energy required in a chemical reaction. So the reaction takes place fast, and also the yield of the product is more. We can say more efficiently, the reaction occurs more efficiently by the application of catalyst. Yes. Good. Basic. Next is chemical kinetics topic is steady state approximation and Lindemann theory, unimolecular, bimolecular. So first of all, Yes, we sir. have to start in steady state approximation. What is steady state approximation? And what is the So role of steady state steady state? approximation. Yes. So steady state approximation basically tells us about the basically relates to the Yes. intermediates of the reaction. So it is assumed that the rate of intermediates, the how fast they are formed is also how fast they are consumed. So their rate of change of concentration of intermediate is taken to be zero. Like they are very quickly formed and they are very quickly consumed. So it is a, we can say, approximation of the steady state that del in change in the concentration of the intermediate with respect to time is equals to zero. What is equilibrium approximation? And what is the difference between steady state approximation and equilibrium
approximation? Sir, equilibrium approximation basically takes that reactants and intermediates are in equilibrium. Like reactant से हमें मिलेगा intermediate, but intermediate and reactants are in constant equilibrium with one another. Intermediate will exist in this equilibrium before giving product. Like अगर intermediate अब वो दोनों equilibrium में है, intermediate से अगर product बन गया तो intermediate कम हो गया, अब equilibrium establish फिर से करने के लिए more intermediate will form. Yes, good answer. Next is Lindemann theory. Okay. What is Lindemann theory, and what is the purpose of Sir, Lindemann theory? Lindemann theory, sir, basically relates uh, to the reaction containing one kind of reactant. Only one kind of reactant. We are giving energy to it. We are energizing it, and it is giving us the product. This specific type of reaction comes under Lindemann unimolecular theory. Yes. Any example? Example, I'm not able to think right now, sir. Sorry. Yes. And what is the effect of pressure in Lindemann theory? High pressure, low pressure, any effect? Sir, yes, sir. In the condition of low pressure conditions, it will be a second order reaction. But in high pressure condition, it will be a first order reaction. Yes. Good. Next is Michelmann equation. What is Michelmann reaction equation? Sir, it basically tells us about the enzyme catalysis, means how much concentration of enzyme is required by the substrate to give us the maximum output of a reaction that is studied in Michaelis-Menten reaction. What is the difference Lindemann theory and Michelmann? So difference is the catalyst part. Here we are using a certain amount of catalyst in Michaelis-Menten theory. But in Lindemann and unimolecular part, we are just stating the activation energy. हमने उसको वहां पे एनर्जी दी, वो एक्साइट हुआ, उसने रिएक्शन दे दिया. यहाँ पे हमने कैटलिस्ट भी एम्प्लॉय किया है, तो उससे भी जो रेट का चेंज होगा, लाइक कितना सबस्ट्रेट यहाँ पे यूज होगा, अगर जो हमने कैटलिस्ट किया यूज, वो जो रेट ऑफ रिएक्शन उसको कैसे हैम्पर कर रहा है, दैट इज स्टडीड इन Michaelis-Menten reaction. Any similarities of steady state equilibrium approximation, Lindemann and Michelmann? Any similarity? So we can say the equilibrium approximation is a further case of steady state approximation. हमने ये कहा स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में कि जो जिस रेट से जो इंटरमीडिएट बन रहा है, उसी रेट से वो इंटरमीडिएट कंज्यूम भी हो रहा है. सो उसकी जो इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन है वो स्टेडी रह रही है, इसलिए हमने उसका चेंज ले लिया जीरो. इक्विलिब्रियम पार्ट में भी हमने यही किया कि हमने ये मान लिया कि वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है रिएक्टेंट्स के साथ, तो वो जितना वो कंज्यूम होगा उतना ही इक्विलिब्रियम के कारण वो फिर से जनरेट हो रहा है. सो वी कैन से द इक्विलिब्रियम इज अ स्पेशल केस ऑफ स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन. Yes. Any application? ऑफ Yes, Michelmann any application? Limitation? सर कौन सी थ्योरी की? Michelmann. सर Michaelis-Menten equation tells us about the maximum rate by Yes. like
किस कंसंट्रेशन का जो हमने एंजाइम लिया, मतलब हमें जो कैटलिस्ट है वो किस कंसंट्रेशन पे मैक्सिमम हमें रेट मिल पाएगा। Yes. Any limitation of Lindemann theory? लिमिटेशन ऑफ लिंडमैन थ्योरी सर, सॉरी सर, आई डोंट नो। No idea. Yes, बेसिक पॉइंट आपके क्लियर हुए, लेकिन आपको क्या करना है, देखो मैं आप बता दूं, एनी टॉपिक्स इन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फॉर इंटरव्यू applications and limitation and purpose, vision. Yes, basic only basic. इंटरव्यू में जो भी पूछा जाएगा वो यूपीएससी में वो सब बेसिक पूछा जाता है, ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको ड्राइव और डिफाइन ये सब डीआरडीओ या बीआरसी में होता है। जितने और इंटरव्यू आप देते हैं, ओएनजीसी हो गया, नालको, इनमें सब में क्या होता है, सिर्फ बेसिक पूछते हैं आपको बस। उनका रोल क्या है, विजन क्या है, पर्पज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, लिमिटेशन क्या है, बस यही पूछा जाता है। ये चीज आपको एकदम टू द पॉइंट आनी चाहिए। क्लियर? ऑल राइट ये सर, ऑल पॉइंट राइट सर। हमने यहाँ पर देख लिए हैं, जो क्लियर हुए हैं आपको। सही, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया है। लेकिन ड्राइव करने के लिए आपके पास कोई प्रोसेस है? जैसे अब मैं हाउ टू ड्राइव इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑन पेज, तो आप कर सकते हैं, आप मीन्स नेक्स्ट मॉक में। Yes sir, I can derive, I have a board, I can derive on that. यस, ओके। तो ये प्रोसेस हम नेक्स्ट मॉक में हम करेंगे। जो भी अभी आपको एक आइडिया दे दिया है मैंने आज, सिर्फ बेसिक हो गया है, जो हमने टॉपिक से देखा है कि आप कौन कौन से कर रहे हैं। आपको अभी एक पॉइंट ये याद रखना है, आपको यूपीएससी के बारे में बेसिक पढ़ना है पूरा। ऑल राइट सर। यूपीएससी क्या है, कैसे है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स में आता है, उसको क्या क्या मेंशन किया जाता है, पर्पज क्या है, विजन क्या है, उसके आगे क्या विजन है, उसका क्या रोल है, चेयरमैन है तो उसका क्या रोल है, आप जिस पोस्ट पे जाएंगे उसका क्या रोल है। तो ये चीज आपको बेसिक अच्छी तरह से कीजिए। क्लियर?